आज का मेरा टॉपिक है इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स बाय ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। टेस्ट के जो स्कोर्स हैं, मार्क्स हैं, उनको इंटरप्रेट करना किस तरीके से ग्राफिक डिस्प्लेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। द डेटा फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी टेबल कैन बी डिस्प्लेड ग्राफिकली। जो फ्रीक्वेंसी टेबल से डेटा हासिल किया गया उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ग्राफ्स पे ग्राफिकली उसको शो कर सकते हैं। ए ग्राफ कैन डिवाइड ए विजुअल डिस्प्ले ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। एक ग्राफ जो है वो एक विजुअल डिस्प्ले करता है, दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशंस तकसीम दिखाता है, which gives us another view of summarized data, जो कि summarized data का view देता है। For example, the graphic representation of the relationship between two different test scores through the use of scatter plots. We learned that we could describe in general terms the direction and strength of the relationship between scores by visually examining the scores as they are arranged in a graph. Some other example of these types of graphs include histogram and frequency polygons. A histogram is a bar graph of scores from a frequency table. ये frequency table से बनाया गया एक बार ग्राफ है जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। The horizontal x-axis represents the scores on the test. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? स्कोर्स को ज़ाहिर करता है जो कि टेस्ट में हासिल किए होते हैं। एंड द वर्टिकल वाई एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस है, वो रिप्रेजेंट करता है, ज़ाहिर करता है किसको? फ्रीक्वेंसीज को। द फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड एज बार। हिस्टोग्राम ऑफ मिड टर्म लैंग्वेज आर्ट एग्ज़ाम। ये एक हिस्टोग्राम दिखाया गया है जिसमें मिड टर्म जो है लैंग्वेज आर्ट्स एग्ज़ाम हुआ है, उसका हिस्टोग्राम है। फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमारे पास वाई एक्सिस पे हैं और स्कोर्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए गए हैं वो 75 से 100 तक लिए गए हैं। इसमें तकरीबन 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स जो हैं वो 75 या उससे अबाव लिए हैं, 75 to 100, और 51 to 75 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं? 7 ने। और 26 to 50 तक मार्क्स 2 स्टूडेंट ने लिए हैं और एक स्टूडेंट ने जो है वो 1 to 25 तक मार्क्स लिए हैं। A frequency polygon is a line graph representation of a set of scores from a frequency table. The horizontal x-axis is represented by scores on the scale and the vertical y-axis is represented by the frequencies. Frequency, polygon, score and frequency. 1 to 25, 1, 26 to 52, 51 to 75, 5 students, and 75 to 100, 11 students. Frequency polygon. A frequency polygon could also be used to compare two or more sets of data by representing each set of scores as a line graph with a different color or pattern. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है इसमें दो या दो से ज़्यादा जो डेटे हैं उनका मवाजना भी किया जा सकता है और किस तरह उनकी जो है वो पॉलीगॉन बनाई जाती है, एक लाइन ग्राफ की लाइन बनाई जाती है जो कि मुख्तलिफ कलर की या पैटर्न की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, यू माइट बी interested in looking at your student scores by gender or comparing student performance on two tests. Frequency polygons are a graphical device for understanding the shapes of distributions. They serve the same purpose as histogram but are especially helpful in comparing set of data. Frequency polygons are also
a good choice for displaying cumulative frequency distributions. Frequency, polygons, frequency, and scores. There are two lines. One line is of blue for boys and one line for गर्ल्स. इसमें स्कोर्स एक्स एक्सेस पे हैं और फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सेस पे है. इसमें वन जो स्कोर है वो कितने स्टूडेंट्स ने हासिल किया है. बॉयज़ ने जो है वो तकरीबन एक स्टूडेंट ने हासिल किया है और 11 गर्ल्स ने जो है वो 11 स्कोर हासिल किए हैं. इसी तरह 3 जो है वो 0 हैं, बॉयज़ 0 हैं और 25 जो हैं वो कितने हैं, गर्ल्स हैं. इस तरह 5 जो है उसमें ऑलमोस्ट 2 जो हैं वो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं वो तकरीबन 19 हैं. To create a frequency polygon, start just as for histograms by choosing a class interval. Then draw an x-axis representing the values of the scores in your data. Mark the middle of each class interval with a tick mark and label it with the middle value represented by the class. Draw the y-axis to include the frequency of each class. Place a point in the middle of each class interval at the height corresponding to its frequency. Finally, connect the points. You should include one class interval below the lowest value in your data and one above the highest value. The graph will then touch the x-axis on both sides. A frequency polygon of 642 psychological test scores is shown in the figure 1. The first label on the x-axis is 35. This represents an interval extending from 29.5 to 39.5. Since the lowest test score is 46, this interval has a frequency of 0. The point labeled 45 represents the interval from 39.5 to 49.5. There are 3 scores in this interval. There are also 150 scores in the interval that surrounds 85. You can easily discern the shape of distribution from figure 1. Most of the scores are between 65 and 115. It is clear that the distribution is not systematic in as much as good scores to the right trail off more gradually than poor scores to the left. In the terminology there, we will study shapes of distribution more systematically. The distribution is skewed. Frequency polygon. Frequency is on y-axis and test scores on x-axis. The most frequency is at 85 and less is at 155 to 175 and 35 to 45. A cumulative frequency polygon for the same test as shown in the figure 2. The graph is the same as before except that the y value for each point is the number of students in corresponding class interval plus all the numbers in the lower intervals. For example, there are no score in the interval labeled 35, there in the interval 45 and 100 in the interval 55. Therefore, the y value corresponding to 55 is 13. Since 642 students took the tentative, the cumulative frequency for the last interval is 642. Test score on x-axis and cumulative frequency is on y-axis. This is a frequency polygon. Frequency polygons are usually for comparing distributions. This is achieved by overlaying the frequency of polygons drawn from different data sets. Figure 3 provides an example. The data comes from a task in which the goal is to move a computer mouse to a target on the screen as fast as possible.
On 20 of the trials, the target was a small rectangle. On the other 20, the target was a large rectangle. Time to reach the target was recorded on each trial. The two distribution, one for each target, are plotted together. The figure shows that although there is some overlap in times, it generally took longer to move the mouse to the small target than to the larger one. Frequency polygon, time meter per second, and frequency is on x-axis. Large target and small target. It is also possible to plot two cumulative frequency distributions in the same graph. This is illustrated in figure 4 using the same data from the mouse task. The difference in distribution for the two targets is again evident. The raw scores for the 10-point quiz are drop frequency graph, bar graph, frequency polygon, and frequency curve. The cumulative frequency is on y-axis and time in meter per second is on x-axis. Large target is shown by the blue line, and small target from the red line. Frequency graph. Frequency graph score are on x-axis and frequency is on y-axis. Bar graph और histograph. बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ शो कराया गया यहाँ पे. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी